हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज सोल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 11 का क्विज असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक 11 असाइनमेंट 1। क्वेश्चन क्या है? व्हिच स्टेटमेंट विल रिटर्न द कैलेंडर फॉर ए होल ईयर। ऑप्शंस क्या है? कैलेंडर डॉट मंथ within parenthesis year, then calendar year, calendar dot pr cal year, calendar dot year. इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच स्टेटमेंट कैन वी कम आउट ऑफ द लूप। इसका आंसर होगा ब्रेक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम डॉट टाइम विल रिटर्न। टाइम डॉट टाइम विल रिटर्न टाइम इन सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लाइब्रेरी इज यूज्ड टू गेट ऑल टाइम जोन्स। इसका आंसर होगा PYTZ। फोर्थ ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड क्या है? इंपोर्ट PYTZ, then from date time import date time as dt, zone is equal to pytj dot all underscore time zones. For I in range length of zone, print dt dot now pytz dot time zone zone of I। इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रिंट द करंट डेट एंड टाइम ऑफ ऑल द टाइम zones। Then next question, in the page rank algorithm 2 and 3, we randomly travel from node to node without any relationship. The maximum visit node will be leader, and we randomly travel from node to neighbor node। ये जो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है, ये दोनों इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 2 and 3। Then next question, if we perform the page rank algorithm on the web as a graph, which of the following is true? Website are nodes and hyperlinks in website are edges. First option. Then next question, in the page rank algorithm, the leader is decided by a node person that is visited maximum times। तीन नंबर ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is correct about the following program? Import random, import matplotlib dot pyplot as plt, l is equal to third bracket open close, count is equal to 0 for I in range 10, guess random dot randint 1 comma 10, pick random dot randint 1 comma 10 if guess not equal to pick count plus is equal to 1, l dot append of count, else count minus is equal to 1, l dot append count, plt dot plot l plt dot show। इसका आंसर होगा both B and C। The graph will go down when guess and pick are the same, and the graph will go up when guess and pick are not the same। Fourth option। The next question, which of the following is not used as conditional statement in Python? Switch। पहले से और एक बार देख लेंगे किसका आंसर क्या किया हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी, थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन एंड 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट आंसर पे क्लिक कर देंगे। सबमिट आंसर पे क्लिक करते ही क्या शो करेगा, थैंक यू फॉर टेकिंग वीक 11 असाइनमेंट 1। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।